The Supreme Court of India delivered a groundbreaking verdict last week in addressing the deep rooted discrimination faced by transgender persons in employment and held that the government's accountable for the failure and implementation of the Transgender Persons Protection of Rights Act 2019 and the 2020 rules. Hello and welcome to The Print. I am Ruchi Bhattar, and at the heart of this case is Ms. Jane Kaushik, a transgender woman and trained teacher who faced repeated discrimination in two private schools due to her gender identity. Could you tell us where are you from and how which areas of the country did you grow up in and which year did you join the first school in? Okay, so basically, I am from Delhi. I have been born and brought up in Delhi, and I've got two master degrees. One in political science, another one is in English. Besides that, I also got a degree in education, that is Bachelor of Education. And I started my career in 2022. हाँ तो मैम ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट द लाइक, ऐसा नहीं था कि जब 2022 में मेरे साथ स्कूल में मेरी जेंडर आइडेंटिटी के साथ के कारण डिस्क्रिमिनेशन हुआ, वो ऐसा नहीं है कि वो पहला इंसिडेंट था। एक्चुअली जैसे मैं दिल्ली से हूँ तो ऑब्वियसली मैंने बहुत सारे स्कूल्स को अप्रोच किया, लेकिन and emails like I used to email them like I'm a teacher of English from Delhi and if there is a vacancy for the teacher of English at your school, please do let me know. And मेरे को email आया भी करते थे reply में, but and like you know but जब मैं as soon as I used to tell them that I am a transgender woman, so now वहां से silence हो जाते थे, कोई email, फिर उसके बाद मुझे कोई email नहीं आया करता था। or even I tried speaking to the HRs of schools and personal उन्होंने मुझे personally बताया मैम that when we told about your gender identity to the principal, even principal was not interested in entertaining your CV, even she didn't have a look at your CV. So लोग ये है, और देखिए ये इतनी आसानी से नहीं जाएगा, मैं आपको बता देती हूँ। एक्चुअली हमारी सोसाइटी को, हमारी जो कम्युनिटी है ट्रांसजेंडर लोगों को, हमारी सोसाइटी में एक स्टिग्मा की तरह देखा जाता है, हम लोगों को एलियन समझा जाता है ना। तो इसके लिए मेन स्ट्रीमिंग, हम लोगों को मेन स्ट्रीम करना बहुत जरूरी है, और वो मेन स्ट्रीमिंग जो होगी वो केवल ओनली एंड ओनली थ्रू हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के थ्रू होगी। when the people will see us working in the mainstream space like in public offices and educational institutions, that when we are visible, सबसे बड़ी बात तो विजिबिलिटी की है ना मैम। हम लोगों को जब विजिबिलिटी मिलेगी पब्लिक ऑफिसेस में, गवर्नमेंट जॉब्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, देन ऑब्वियसली जो लोग आज हम लोगों के लिए आप देखेंगे, वो हम लोगों के लिए बहुत सारे रोजगार के जो अवसर हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी उपलब्ध नहीं है, बिकॉज पीपल आर यू नो ऑफ दैट मेंटेलिटी की मतलब अगर आपको वो दरवाजे, वो बंद दरवाजे भी खोलने हैं ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, तो सरकार को एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, एंड दे हैव टू गिव अस हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंटेशन, जिसके द्वारा हम लोग सरकारी नौकरियों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में आएंगे और हमारी विजिबिलिटी बढ़ेगी, और जो आज दरवाजे हमारे लिए बंद है वो दरवाजे भी खुलेंगे, और इस तरह से सोसाइटी के अंदर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की मेन स्ट्रीमिंग हो पाएगी। आप आज भी किसी पब्लिक ऑफिस में चले जाइए, एमसीडी में चले जाइए, आप किसी भी ऑफिस में चले जाइए, you will be able to see men and women working there. Will you be able to see a transgender working there? Will you be able to see a transgender studying at a public university, at a college? No, हम लोग नहीं देख पाते हैं। तो जब तक हम ये विजिबिलिटी नहीं आएगी तब तक मेन स्ट्रीमिंग भी नहीं होगी, और लोग भी हमें लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। Could you tell us what happened at the first school? मैं मतलब ये बताना चाहती हूँ आपको कि obviously that was my first job, I would say, like you know, at the UP school, and it is about 2 years back, 2 or 3 years back. It is one of the students at the hostel, a girl got to know about my gender identity, and then this also like principal also got to know about this incident that happened with me at the hostel of the school, and then
I getting insecure of the news being spread or among the school, like among the students. She terminated me immediately. Even she didn't let me take the classes that day. And she also asked me to vacate the hostel at the same time, even when there was no train available for Delhi from that place. So I had to take a late night bus from that small town. And uh, I was so much scared. I myself was so much scared because you see, traveling from a small town, uh, like it is not even it is not secure for women. And when I boarded the bus, there was no female passenger in the bus. On the bus, there was no single female passenger. I was more scared of the fact. And then there is a big bus stand that called Shahjahanpur, and from there some women boarded the bus, and then I got a breath of relief. I took the breath of relief that time. आपने बताया कि फर्स्ट स्कूल में 2022 में ये सब कुछ हुआ यूपी वाले स्कूल में। सेकंड स्कूल ने आपको कैसे अप्रोच किया? आपने उनके पास आप उनके पास गई या वो आपके पास आई? वो कैसे हुआ? सेकंड स्कूल में आपके साथ क्या हुआ? आप प्लीज हमें बताएंगी? हाँ, मैम, मैंने उस स्कूल में एक रिक्रूटमेंट कंसल्टेंसी जो कि पंजाब में लोकेटेड है, वहां पर मैंने उनके थ्रू अप्लाई किया था स्कूल में. आई क्रैक द इंटरव्यू. दे प्रोवाइडेड मी ऑन ऑफर लेटर, and everything was settled, means, and I was asked to to reach the school for joining. And so I like when I was there in my journey to Gujarat. So I was on a train. I told them, sir, I am about to reach Gujarat, and since there are since it's a residential, it's not a residential school, it's a day school. What about my temporary lodging? This is So and board. 2023. This is 2023. हाँ, इट इज 2023 जुलाई. एंड फिर उन्होंने मेरा आधार कार्ड मांगा सो दैट दे कुड बुक अ होटल फॉर मी. आई सेंड देम माय आधार कार्ड, एंड देन दे फाउंड आउट दैट द कैंडिडेट दे हैव अपॉइंटेड फॉर द पोजीशन is a transgender person. So then that time they got to know, and then I got an call from their HR, one of their HR executives, and she was literally scolding me on the over the phone call that, Jane, you are a transgender woman. आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया ये बात? So she was shouting at me literally for my gender identity. Then I tried to make them understand that, sir, see, I am a transgender woman. I am a woman. I have got my surgery done. I've got my surgery done. And there is there is कोई ऐसी बात नहीं है, आपको डरने की बात नहीं है, मतलब कि. And I live and lead a life of a female only. सो उनको फिर उन्होंने मुझे अपने स्कूल में एक बुलाया. एंड उन्होंने मुझे कन्विंस करने की कोशिश करी कि मैं स्कूल ज्वाइन ना करूं, और उन्होंने मुझे ज्वाइनिंग भी नहीं दी. और साथ में जब मैंने उनसे बोला, ओके, यू आर रिजेक्टिंग मी, just give something me in something to me in written, like that you are rejecting my candidature, or if you are rejecting my candidature after selecting me. So they gave nothing in reply. And what they were suggesting me, अरे तुम्हें कोई बड़े स्कूल में काम कर, कोई बड़े टाउन में जाके, सिटी एरिया में जाके काम करना चाहिए. अच्छा, तुम ऐसे करो, तुम अहमदाबाद चली जाओ, वहां पर स्कूल है. नहीं नहीं नहीं, शायद अहमदाबाद भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा, तुम दिल्ली चली जाओ, तुम ये चले जाओ, ऐसे से, मतलब इंस्टीड ऑफ गिविंग मी जॉब, दे वर गिविंग मी सजेशंस, मतलब की, है ना. आई अंडरस्टैंड. और एंड बच्चे बिगड़ जाएंगे तुम्हारे कारण, बच्चे बिगड़ जाएंगे. नाउ नाउ यू जस्ट टेल मी, मेरे कारण बच्चे क्या बिगड़ जाए? एम आई टेररिस्ट हु आर गोइंग टू ट्रेन देम फॉर सम टेररिस्ट एक्टिविटीज, और बच्चे मेरे कारण कैसे बिगड़ जाएंगे? आई Those were the अंडरस्टैंड. words, those were the words of a principal whom we expect to be educated and sensitive towards the people who are from marginalized communities, and that's what we expect them to teach at their school about us. Okay. That is something really that must have been very traumatic for you. After that, you approached several institutions like Yes, ma'am. National Commission for Women, Human Rights Commission, National Council for Transgender People before coming to the Supreme Court. So वहाँ पे क्या हुआ एंड ऐसा क्या हुआ इन तीनों इंस्टीट्यूशंस में जो ह्यूमन राइट्स के मेजर इंस्टीट्यूशंस है जिसके कारण आपको सुप्रीम कोर्ट आना पड़ा?
मैम देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू दैट नेशनल कमीशन ऑफ women has set up a committee consisting of local officers like DM and this like SDM and this social welfare officer, some one educational officer, and one more was one police officer was there. I was not satisfied because you see they didn't ask me any one question related to the discrimination I met there. उन्होंने मुझसे वो सवाल पूछे ही नहीं. और मैम आई वुड से मींस ओपनली आई कैन से वो कमिटी जो है उसको इन्फ्लुएंस किया गया थ्रू स्कूल बिकॉज सी school is a school we having one about 1000 of students. That is a big institution, right? So they can influence the people, local officers easily, and that's what happened in the reality as well, on the ground as well. ये सब होता है, ma'am. A committee having local officers, what can we expect from such a committee, right? Ma'am, I'm telling you this thing. I could have called up the police. I could have called the police that day, the moment they were terminating me from my services. But why? Why didn't I go to the police or station, or why didn't I call up police by dialing 100, 100? Because of this fact only, ma'am. मैं एक महिला हूँ, वो भी एक ट्रांसजेंडर महिला हूँ. आई बिलोंग टू अ वल्नरेबल ग्रुप ऑफ सोसाइटी, एंड आप ये देखिए, ऐसे भी इंसिडेंट्स हुए हैं पुलिस स्टेशन के अंदर जहां पर ट्रांसजेंडर वुमेन के कपड़े उतरवाए गए हैं. यू जस्ट गो थ्रू सम न्यूज. तो जहां जहां पर पुलिस इतना इंसेंसिटिव होती है हम लोगों के प्रति, हाउ कैन आई डे टू गो टू द दिस पुलिस स्टेशन और a place like that. But Okay. जैसे ही मैं दिल्ली आई, I contacted Delhi Commission for Women. I told them everything what had happened with them. They directed the police to take my complaint, and they asked me to go to the police station in Lakhimpur Kheri in UP. I went there. I got my complaint registered. Even that time also the police was not willing to register my complaint. They just simply registered my complaint in Women Help Desk register. Okay. They, And yes. what happened to those complaints now? Like, where are those complaints? उनकी status report क्या है? Ma'am, nothing happened. Nothing. That's what I'm telling you. For like, nothing happened, and that is the only that like these are the all factors that made me to go to the Supreme Court for the final relief. Okay. And now that the Supreme Court has, in a very detailed judgment, ordered also compensation for you, let's come to that part first. उन्होंने total Supreme Court has ordered a compensation of 2 lakhs total, 50,000 each from state government of Gujarat and Uttar Pradesh, 50,000 from the central government, and again a batch of 50,000 rupees from the second school where you were denied employment. How do you view that? मैम आई डोंट थिंक कि जो ये कॉम्पनसेशन अमाउंट है कि सही है बिकॉज उन्होंने मुझे टर्मिनेट किया. मैं 6 to 7 months अपने घर बैठी रही. 45,000 प्लस मेरी सैलरी थी. यू जस्ट ये जो अमाउंट है ये उस अमाउंट के बिल्कुल भी इक्वलेंट नहीं है. जब मुझे गुजरात स्कूल ने अपॉइंटमेंट देकर भी नहीं अपॉइंटमेंट दी, दे डिडंट लेट मी ज्वाइन द स्कूल दैट टाइम आल्सो. और मैम जो इतना सब मैंने ये जो ट्रॉमा है मेंटली, आई एम स्टिल ऑन द दिस मेडिसिन. आई एम स्टिल टेकिंग साइकेट्रिस्ट हेल्प to recover from this depression, this trauma and all that. So अभी भी तो उसका क्या मैम? They have affected my mental health so badly that now I don't like. It's been 2-3 years continuously I'm taking these medicines, consultations and all that, but I don't think it would go so easily and abhi jaldi se chala jayega so soon. No, I don't think so. What about that, ma'am? It's not I just about money. It is about my mental health. It's also about my prestige. ये मेरे एक मेरे प्रेस्टीज, मेरे स्टेटस और मेरे मेंटल हेल्थ के साथ उन लोगों ने जो खिलवाड़ किया, उसका क्या मैम? डू यू थिंक दिस 2 lakh rupees is justified for that? And the government, ma'am, I'm not very much hopeful of this judgment. Why I'm not much hopeful? Because this is not the first judgment or the some legislation that has come for transgender persons. We already have NALSA judgment 2014. We have Trans Act 2020 19. We have rules 2020. But what about those things? They have not been implemented yet.
सो But अभी अभी आप पॉलिसी बना लीजिए, आप कमेटी बना लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, क्या मुझे, बट what the thing is implementation, how the things will be implemented by the how the things are going to be implemented by the government and by these executive especially. So अभी भी हमारे पास ऐसा कुछ, और इसके बाद ये नहीं है मैम, अभी मेरे साथ दूसरे स्कूल से मैं डिस्क्रिमिनेशन हुआ क्या, मेरे साथ उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ? 2024 में मेरे साथ उस राजस्थान में 3 से 4 स्कूल ने डिस्क्रिमिनेशन किया है, एंड दे टर्मिनेटेड माय सर्विसेज विदाउट एनी रीजन। ऐसा नहीं है कि मैं कोर्ट में चली गई और मैंने कोर्ट में एक बड़ा केस फाइल कर दिया और मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया। नो मैम, ये डिस्क्रिमिनेशन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक ये पूरा जो हमारे जो डायरेक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो नालसा जजमेंट है, ट्रांस एक्ट 2019 है, 2020 है, जब तक ये अपने पूरे लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट नहीं किए जाएंगे, nothing is going to happen. And one more thing I want to tell you that since I belong to a gender minority, so जो पॉलिटिकल विल है उसका होना बहुत जरूरी है, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है, बिकॉज आई बिलोंग टू अ जेंडर माइनॉरिटी, वी आर नॉट अ वोट बैंक फॉर द पॉलिटिशियंस, so they don't see us as that much important as they see others. So we are a kind of second class citizen of this country. That's what ma'am, that's how I see myself, because I that's am a how second class you citizen of this country. There is no penalty for, there is no penalty for the people, those who are who discriminate against us in the sphere of employment, in our private life, in our public life. There is nothing. Even you see, if there is a criminal offense against us, you see 2019 act that says only you will the offender will get only a punishment from 6 months to 2 years. While on the other hand, if a person commits any crime against a woman, especially even let's talk about rape, the punishment goes from 7 years to up to life in lifetime. prison. Yes. तो वर्डिक्ट के बाद अब आप क्या कर रही हैं? हाउ डू यू व्यू द वर्डिक्ट? आई मीन अब आप और लाइफ में क्या कर रही हैं आगे आपको एम्प्लॉयमेंट की फेज में? एंड वेयर आर यू बेस्ड राइट नाउ? मैम मैं अभी हैदराबाद में हूँ, मैं एक स्कूल में काम करती हूँ, एक रेसिडेंशियल स्कूल है। लेकिन जहां भी जाइए ना, आपको एक या तो आपको जॉब लेनी है या अपनी आइडेंटिटी, जहां पर भी आप जाएंगे आपसे कहा जाएगा मैम प्लीज डोंट रिवील और डिस्कस अबाउट योर जेंडर आइडेंटिटी विद द स्टूडेंट्स, विद द स्टाफ मेंबर्स, विद द पेरेंट्स। सो अभी आप हैदराबाद में हैं स्कूल में एक एंड कॉम्पेंसेशन के अलावा भी आप सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट है, आप उसको कैसे देखती हैं? उन्होंने बहुत सारे डायरेक्शंस भी दिए हैं, तो क्या उसमें आपको कोई होप नज़र आती है? मैम डायरेक्शन देखिए, आज हम पॉलिसी बनाने की बात करते हैं। देर इज ऑलरेडी अ केस ऑफ ट्रांसजेंडर एयर होस्टेस, हुँ, बट यस, उसमें भी कहा था, सरकार को कहा गया था एक पॉलिसी बनानी है ना? जब उसके साथ एयर इंडिया में दे डिडंट एंटरटेन हर कैंडिडेचर जस्ट बिकॉज शी वाज अ ट्रांसजेंडर वुमन, तो उसके बाद भी पॉलिसी की बात आई थी कि एक नेशनल पॉलिसी होनी चाहिए फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसजेंडर राइट्स। बट जिसके कारण उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशनल स्पेस में। बट मैं दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू मैम, इट इज ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंट पॉलिटिकल एंड ब्यूरोक्रेटिक विल। ओके, I don't ओके। know whether they are going to like you just see ना, अभी आप ये देखिए नेशनल कमीशन फॉर women के साथ एक कमिटी बनाई गई, and that consisted of some local officers that obviously that comes from executive only, and how they presented the report. Sometimes I feel being a transgender woman is a, अभी तक नहीं feel करती थी when I accepted myself as a transgender woman in 2019, एंड आई डिडंट मतलब मैं नहीं सोचती थी ये किसी तरह का मतलब वो है, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है मैम बीइंग अ ट्रांसजेंडर वुमन इन दिस कंट्री इज अ क्रश। आई And अंडरस्टैंड, आई I also think that, ma'am, I should not have come out as, and I should not have accepted my identity if there is so much discrimination just based on your identity, gender identity. तो मुझे आज ऐसा लगता है कि मुझे अपनी जो अस्तित्व है उसको नहीं अपनाना चाहिए था। अपने जो मेरा असली अस्तित्व है, जो मेरा सही पहचान है, उसको नहीं, मेरे को कम आउट नहीं आना होना चाहिए था मैम। मैं बहुत रिग्रेट करती हूँ अपने इस डिसीजन को, लेकिन उस समय भी मैं बहुत जेंडर डिस्फोरिया, बहुत सीवियर जेंडर डिस्फोरिया से गुजर रही थी, जिस जब मेरे को सामने आना पड़ा
एज अ वुमन सोसाइटी के सामने। लेकिन मैम अब मुझे ऐसा लगता है कि एक मतलब दोनों में रास्ते मेरे लिए, मैं एक जेंडर डिस्फोरिया के साथ नहीं जी सकती और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ नहीं जी सकती समाज में। तो इसका मतलब मुझे मर जाना चाहिए। इस वर्डिक्ट के बाद आप अब क्या प्लान करती हैं करने का, और आप क्या ग्राउंड पे चेंजेस देखना चाहती हैं? मैम देखिए, मुझे नहीं लगता है पहले तो कि कोई चेंज होगा इसके बाद, बिकॉज क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि ये, मैंने अगेन आई वुड लाइक टू से कि लाइक दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जजमेंट हैज बीन डिक्लेयर्ड और देयर इज सम लेजिस्लेशन ब्रॉट इन। पहले से भी एक लेजिस्लेशन है, ट्रांस एक्ट 2020 एंड रूल्स 20 ट्रांस 2019। एक्ट 2019 एंड रूल्स 2020 और नालसा जजमेंट 2014। They are already there. It is all about implementation, ma'am. I'm not saying this judgment. I don't think this judgment has brought up something, something new. It is, they already exist in the previous legislation and the judgment. Up now the court has left it again. See, court can't court can't implement. That's not court's role. Court's role is to give a judgment. Implementation remains up to the executive. तो ये तो एग्जीक्यूटिव पॉलिटिकल विलिंगनेस, ब्यूरोक्रेटिक विलिंगनेस पे डिपेंड करेगा कि हाउ मच ऑफ दिस जजमेंट विल बी अप्लाइड ऑन ग्राउंड। Okay. Okay. Thank you so much, Jane, for joining us today and sharing your story and your strength with us today. Thank you, viewers, for joining us. Her case has compelled the state to confront its silence and also reminded us that discrimination is not always loud. Sometimes it's the quiet denial of systems that refuse to act. Thank you for joining us.